हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू BigGyaan, आपणको प्रथम ओडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉडकास्ट। मु भार्गव आचारी आपणको BigGyaan होस्ट। आज 4 डिसेंबर 2020 आजिर विज्ञान अपडेट रे अछि। अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 7 दिन क्वारंटाइन रहबा सफिशिएंट। व्हाट्सएप रे कस्टम वॉलपेपर प्रति चैट रे आपण एबे सेट करि परिबे। प्रथमे कोन होतला ना गोटे ही वॉलपेपर रोतला सब चैट रे। For each and every chat you can set a different wallpaper. Snapdragon 888 5G chipset ro announcement heichi. Kon nuwa aschi, kon special achi, we'll try to uncover some of these. AI solve karichi shape of proteins problem. Actually problem da kon thila au kemiti AI successfully eta ku solve kari parila. We'll try to understand, we'll try to unravel. Amazon and Apple मिसिकी Intel रो बैंड बजेवा प्लान रे अछंती। एक्चुअली से मन कौन करबा को जाउछंती देखिबा। एप्पल फॉक्सकॉन को कहिछि फोल्डेबल एप्पल फोन रो टेस्ट यूनिट बनेबा को। सो एप्पल इज इनटू द गेम नाउ। आउ एहा सब बहुत किछि भी अछि, चलंतु स्टार्ट करबा। किंतु सेति पूर्वरु मु किछि कहिनी विज्ञान डेली को लास्ट 2 वीक्स हला मु करि पारिनी, सेति पय आई एम रियली सॉरी। बट जेहेतु विज्ञान डेली को डेली करबा मो पक्षे कष्ट होउछि, मु करि भी पारिलिनी लास्ट 2 वीक्स हलानी। मु विज्ञान रे किछि चेंजेस आनिबा को जाउछि। विज्ञान डेली को हमें विज्ञान अपडेट्स बोली रीनेम कर दबा। एंड मोस्टली आई वुड डू 2 एपिसोड्स इन ए वीक। एबे जाय जति कि इंटरेस्टिंग लागि छि ताठू अधिक बेटर करबा मोर उद्देश्य अछि। देखा जाऊ कोन होछि। तो चलंतु आजिरो विज्ञान डेली विज्ञान अपडेट को डिस्कस करबा। सो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन कौन करछि ना से माने कहले 14 डेज बदल रे 7 डेज इज एक्चुअली गुड एनफ। से माने कहबार रीजन कौन जो क्वारंटाइन पीरियड से माने कमेले तार पछर रीजन होछि एटा जे 4-5 डेज रे ही नॉर्मली जो माने इन्फेक्टेड अछंती तांगे सिम्पटम डेवलप कर दियंती। आ जे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट ताठू एनीवे आमे पूर्वर ही कथार्थ आइछन जे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट माननको रिस्क बहुत कम जे कोविड स्प्रेड हबो। सो ओनली दोज हु डेवलप सिम्पटम्स इन 4-5 days आर एक्चुअली द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ द वायरस। इफ वी somehow stop them or if we kind of limit their exposure to others, we'll be effectively restricting the COVID-19 itself. So this is the logic. And actually आम ओडिशा गवर्नमेंट भी आगुरु ए प्रकार पॉलिसी आनी नहीं छी। and even Indian government has done similar stuff. So it's not a big thing or new thing, but it's good that whatever we have done आम गवर्नमेंट कौन करिछि सेटा पुणी एसर्ट ही जाउछि यूएस रो सीडीसी द्वारा मध्य। सीडीसी जोड़ा ठीक भाविला सेटा हम ऑलरेडी आगुरु करिथिले, which was more appropriate to support our economy. गोटे इंटरेस्टिंग न्यूज मु पाइली कोविड-19 रिलेटेड। सेटा होछि जे ना एस्थमा पेशेंट्स होछंती लेस प्रोन टू कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19। जहां को एस्थमा अछि से माने एक्चुअली लेस लाइकली टू गेट द कोविड-19 even spread the COVID-19. Why is this happening? Let's get into it. Actually गोटे रिसर्च जर्नल रे पब्लिश हेतला एडा ना कोविड-19 susceptibility in bronchial asthma। सेतरे लेखा हिची we observed lower COVID-19 susceptibility in patients with pre-existing asthma, but more just माने blind guess जे मे बी से माने बहुत प्रिकॉशंस नहीं कि रुहंती बोली से मे बी से मानो को कम लोगों को हेतिबो। से जो स्टडी रे से मैंने अबाउट 38,000 पार्टिसिपेंट्स को टेस्ट नहीं थिले और अप्रोक्सीमेटली 6% थिले पॉजिटिव कोविड-19। एस्थमा वाज फाउंड इन 153 subjects of the COVID-19 positive group and 3388 subjects in the COVID-19 negative group. किंतु परसेंटेज हिसाब रे देखिया गले अप्रोक्सीमेटली 7% थिले कोविड पॉजिटिव ग्रुप भितरु और अप्रोक्सीमेटली 10% थिले कोविड नेगेटिव ग्रुप रु। सो से हिसाब रे देखिया गले इट्स लाइक काइंड ऑफ इंट्यूटिवली अंडरस्टैंडेबल, राइट?
जो माननको एक्चुअली आस्थमा आगुरु हेतले से माने कम एफेक्टेड थिले. गोटे इंटरेस्टिंग न्यूज अंटार्कटिका विषय रे बाहर छी एंड इट्स अनदर आई मीन एटा आहुरी इंटरेस्टिंग होची काहेकि ना एथरे ब्रिटिश लोक मानकर इन्वॉल्वमेंट अच्छी. एक्चुअली कौन है ना अंटार्कटिकार 28टा जगह को नामित करा जाइछि आ सेगुडा को नामित कहा नाम रे करा जाइछि ना सेटा हेछि ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स मानक नाम रे. सो इट्स एन इंटरेस्टिंग phenomenon. Why? Because Britishers have a lot of time to do this kind of stuff, to explore, to roam around, to find. So they have always been doing this, right? ଏବେ ବି ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି. ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ନାଁରେ ଆସିକି ଆମର କଲୋନାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ବି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି. ବଟ୍ ୟା ଦ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଏ ବେଟର ସିଚୁଏସନ୍ ନାଉ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ those days, those hundreds of years ago. And the tragic thing is that they are actually some of the great people from very good universities like University College of London. So these people have actually died in exploring the world, exploring the life or exploring the nature. So this is not a small thing, right? So it's justifiable why the world is agreeing to honoring those British explorers and ସେମାନଙ୍କର ନାମରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗାକୁ ନାମିତ କରିବା. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ରାଇଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା AI ସଲ୍ଭ କରିଛି. ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା. ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୟୁଜଫୁଲ୍ ହୁଏ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ. ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ କହିବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋସେସେସ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଭଲସେ କରିପାରିବା ଇଫ୍ वी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. Understanding the structure of proteins have been a tough problem because putting them or like understanding them with the simple mathematical equations has been very difficult, or even like storing them in the raw form of data and then understanding them and interpreting them has also been difficult. So ebe kon heichi na DeepMind ଗୋଟେ company ଅଛି actually. DeepMind actually is owned by Google. तो एक कंपनी रे लोक कौन करती ना एमती गुड़ाए अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम को नहीं से माने रिसर्च करती और से माने ट्राई करती सॉल्व करने पे. तो एठी से माने पाखापाखी 17 लाख सैंपल नहीं चंदी से माने सीक्वेंसेस ऑफ प्रोटीन एंड शेप्स एगुड़ा नहीं कि से माने ट्रेन करचंती ऑन ए जीपीयू सीपीयू क्लस्टर आउ से द्वारा कौन है ना एक्चुअली स्ट्रक्चर गुड़ा को आइडेंटिफाई करी होची वर्तमान यूनिकली आइडेंटिफाई करी होची which is basically a deep learning problem. It's not a big deal so to say. माने जो हिसाब रे हमें जाउछन डीप लर्निंग रे रिसर्च करी करी अनुवा जिंस गुड़ा को सॉल्व करी करी एटा भी हबाटा इनएविटेबल थिला ली कोइ पारे. किंतु getting such a big breakthrough at such a scale is awesome. And एक्चुअली यार बाई प्रोडक्ट्स कौन हम ना गुड़ाए आम मेडिसिन उपलब्ध हो पारे गुड़ा आम प्रोटीन गुड़ा को पुणी रिप्रोड्यूस कर सेम शेप एंड सेम टाइप रो प्रोटीन गुड़ा को रिप्रोड्यूस कर मे बी आम ऑब्जर्व कर व्हाट हैपेंड बाय द कंजम्पशन ऑफ वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन एंड व्हाई इट हैपेंड. सो दोस काइंड ऑफ रीजनिंग विल बी मच इजियर आफ्टर वी आर using this DeepMind's analysis. ମୁଁ ଗତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ जो 4-5 एपिसोड्स ମୁଁ କରିଥିଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରେ ବିଜ୍ଞାନର ସେଥିରେ ମୁଁ 2-3 ଥର ପ୍ରାୟ ଆପଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି ଆଉ ଆପଲ୍ର अपकमिंग सिलिकॉन अपकमिंग नहीं एक्चुअली आसी जाइथिबे सिलिकॉन विषय कहली जो सिस्टम ऑन चिप M1 सिस्टम ऑन चिप विषय रे से M1 सिस्टम ऑन चिप को कौन करछि Amazon कौन करछि ना Amazon क्लाउड रे तांकर Amazon वेब सर्विसेज जो अछि AWS रो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड अछि से क्लाउड रे Amazon गुडाए इंस्टेंसेस बने दीछि लाइव इंस्टेंसेस जोड़ा आपण पे डायरेक्टली यूज कर पारी. सो यू डोंट इवन नीड टू बाय एन एप्पल
PC or an Apple Mac to eventually explore the M1 system on chip. Rather, you can simply take an EC2 instance, elastic compute instance on the cloud, and use it to explore what is happening in this system on chip and how this system on chip kind of makes a difference or what is happening. These instances are easily creatable, but for now they only support Mac, and maybe even in near future it will be only Mac. So it's nothing of a big deal. Maybe कौन होगा ना जो डेवलपर मैंने अच्छी ऐप डेवलपर मैंने वंतु कि सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने वंतु सेमानंको पाई इट विल बी समथिंग ऑफ ए बोन. सेमाने किछि जदि नुआ ऐप डेवलप करियो चाहउछंती आ सेमाने किछि मैक न किनि कि करियो चाहउछंती, इट इज पॉसिबल नाउ बिकॉज यू गेट दोज रियल M1 instances from or through Amazon cloud. So that's a good news for those developers. And how it is going to change the world of computing, I see this as something where people will start using these M1s for general cloud computing as well, for offloading computing to the cloud or to the Mac ecosystem itself. Suppose आपणकर किसी काम थिला किसी गोटे रिसर्च थिला जोड़ा आपण करिया चाहूथुले किमा किसी गोटे बड़ वर्कलोड थिला जोड़ा आपण रन करिया चाहूथुले क्लाउड रे. नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू चूज इंटेल और राइजन और M1. तीनिटा एबे चिपसेट प्रोवाइडर अछंती जो माने मेजर चिपसेट प्रोवाइडर बा प्रोसेसर प्रोवाइडर जो मानकर आपण एबे यूज कर परिबे. So our option basically add hochi. This is a very new option. It's ARM based option da. So it has definitely its new trade-offs. So you have to consider those trade-offs before putting your job out there on these Apple systems. Our interesting news hochi again Apple chalche ajibisi. Apple asks Foxconn to build test unit for upcoming foldable iPhone. Apple ro iPhone foldable iPhone आसीबो इवेंचुअली सेटा तो कहबारी आमे किंतु जो प्रोसेसटा ऑलरेडी चली छी बैकग्राउंड रे जो प्रोसेसटा ऑलरेडी चली छी ताहार टिके जतले पर्दाटा हमकु उठी जाय कि दिसे न ओटे झलकटी तेतला हम मजा आसे सेही मजाटा होची एही मजा. सो कोन हेची बेसिकली किछि लीक्स आसी छी जो मन चाइनीज लीक करचंदी किछि सेमान कौन करछंती ना एप्पल फॉक्सकॉन होची गोटे फोन मैन्युफैक्चरर कंपनी, नॉट जस्ट फोन एक्चुअली सी चिपसेट गुड़ा बनाए इंटेल रो मदरबोर्ड गुड़ा बनाए गुड़ाए वेंडर्स अछंती जो माने ए प्रकार काम करंती. फॉक्सकॉन छड़ा बहुत गुड़े अछंती किंतु फॉक्सकॉन होची एप्पल रो मेजर OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. सो एप्पल एबे फॉक्सकॉन को कहिची जे तमे गोटे फोल्डेबल Apple iPhone रो गोटे यूनिट बनाओ टेस्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट. So it won't be just one unit actually, it will be a set of units based on the same configuration basically. So they will be testing it out in the next 1 year or so and then they might release it into our hands. So let's see how it goes. Qualcomm एति भितर गोटे लीप फॉरवर्ड करछि. एक्चुअली समाने जो Snapdragon 800 सीरीज रो प्रोसेसर अछंदी सेडा रो 888 SG Snapdragon 888 5G मोबाइल प्लेटफॉर्म. एटा भी गोटे सिस्टम ऑन चिप जेमिति M1 सेमति ही एटा भी गोटे सिस्टम ऑन चिप. एथरे 5G मॉडेम अछि, AI प्रोसेसर अछि, GPU अछि, CPU अछि, सब गुडा अछि. नुआ जिनस कोन माने एटा 5G दे देछि इंटीग्रेटेड. X60 गोटे मॉडेम अछि Snapdragon रो, से मॉडेम यूज करछि जोडा कि बहुत फास्ट भी हबो रिलायबल भी हबो 5G यूसेज पे. ऑब्वियसली हम पे इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बट इवेंचुअली हम पे किछि अछि वी कैन थिंक ऑफ इट. सो व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज एक्चुअली आई हैव हर्ड फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स दैट देयर आर 5G backbone networks being installed now actually. So 5G network गुडा हे जाउछि ready, maybe within a year or so we'll have these 5G technologies in our hands as well. आउ गेमिंग क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होची एई चिपसेट रे. सेटा स्नैपड्रैगन रो क्लेम अछि पाखापाखि 35% हायर क्वालिटी ग्राफिक्स मिलिबो एक्सपीरियंस.
आउ एआई इंजिन भी 3 टाइम्स एक्चुअली पावर एस्पेक्ट रे इम्प्रूव होइछि. सो फॉर एग्जांपल फोटो आपण क्लिक करथिले से टाइम रे एआई इंजिन ना आपन एक्टिव रहउतला. एबे कम पावर कंज्यूम करियो माने कम बैटरी कंज्यूम करियो. ओवरऑल चिपसेट अपग्रेड टा एक्चुअली इट लुक्स गुड. आपण केबे भाबिछन्ते कि मंगल ग्रह रे जीवन रही पारि थांता? भाबिथिए बोधे मो भाबुछि. मो आगुरु भी कहितली मंगल ग्रह विषय रे 2 दिन थर मोर काइना गोटे मंगल ग्रह सहित अटैचमेंट गोटे रही जाइछि सबबेले. तो सबबेले हम मंगल ग्रहटा विषय रे जानिया को मु चेष्टा करे कौन होछि कौन नहीं फॉलो करथाए. तो सेही फॉलोइंग रे मु आ गोटे न्यूज़ भी जानिया पाइली. मंगल ग्रहर भूतल भाग रे गुडाए माइल तले जाइकी सबुठु अधिक उच्च कोटिर जीवन बंचिबा पई जगह थांता बोली गोटे प्रकार अनुमान लगे वैज्ञानिक माने. रुजर्स यूनिवर्सिटी रो गुडाए रिसर्चर्स ए रिसर्चटा करछन्ती और सेमानक कहे अनुसार कौन ना जेहेतु भूपृष्ठ भाग रे ग्रीन हाउस गैसेस अच्छी आ गुडाए हानिकारक गैसेस अच्छी. भूतल भाग रे मार्स रे एक्चुअली बंचिबा पई उत्तम संभावना थाई पारे बोली से माने कल्पना करछन्ती माने अनुमान लगैछन्ती. आउ गोटे आपन डेली लाइफ रे यूज होथवा अपडेट व्हाट्सएप रे एबे कोन होबो ना आपण पर चैट थ्रेड आपण वॉलपेपर एबे सेट करि पारे. फॉर एग्जांपल आपण को बेस्ट फ्रेंड पई गोटे अलगा वॉलपेपर सेट करि पारे. आपण को स्कूल सारंग पई गोटे अलगा वॉलपेपर सेट करि पारे. आपण को गर्लफ्रेंड पे आउट वॉलपेपर सेट करि पारिए. यू हैव अनलिमिटेड चॉइसेस नाउ. पूर्व कोन होतला ना इफ यू सेट अ वॉलपेपर इन अ चैट इट्स एक्चुअली कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल द चैट्स which didn't make sense to me. Why WhatsApp is bringing these features, so called obvious features, so late? I don't know, but see, better be late than never, right? So jahan le bi se at least ani to dele, so let's enjoy that. Au Ajira BigGyaan re basically etik hi achi, but before I conclude today's BigGyaan, let me share some other things that I wanted to say. मोर वर्क फ्लो रे मो इम्प्रूवमेंट करिया चाहूँगी. आउ वीडियो रिकॉर्डिंग एक्चुअली मोर वर्क फ्लो रे हिंडरेंस हो जाउछि. मोर मेन पर्पस होछि आपन सह इन्फॉर्मेशन शेयर करिया, आपन को डेली विज्ञान रिलेटेड अपडेट्स दबा, साइंस रिलेटेड अपडेट्स दबा, टेक्नोलॉजी रिलेटेड अपडेट्स दबा. आ जदि सेटा मोर हिंडरेंस होछि माने मु मे बी टिके टेम्पररीली वीडियो को अवॉइड करिबी. और परे जेतेबेले मो पई सुविधा हे जीवो जे वीडियो भी रिकॉर्ड करि परिबी सेता मु वीडियो आपन को सह शेयर करिबी. सेति दिन पर्यंत मु चेष्टा करिबी जे मु सिंसियरली आपन को पॉडकास्ट एवरी डे दिए माने एटलीस्ट जो ट्वाइस इन वीक प्रॉमिस करछि आपन को सेटा को मु स्टिक करिबी और आपन को अपडेट्स दउथि. सेति पई आपन टिके कोऑपरेट करंतु. और जदि आपन को किछि फीडबैक अछि किछि डेफिनेटली आपन शेयर करंतु. आई विल बी ईगर टू लर्न अबाउट इट. और ता ऊपर मु किछि जदि इंप्रूवमेंट करि परिबी हम पॉडकास्ट को ताले मु डेफिनेटली करबी. आज पई एतिकी. धन्यवाद. विदाय एवं नमस्कार.